Welcome to my study channel. Friends, our today's topic is trial balance. This topic is most important for your selection. So friends, as you know, we are preparing videos as per the syllabus of JKSSB Panchayat Accounts Assistant. So friends, this topic is most important. Without wasting time, let's start. Question number 1 is the basic purpose of preparing a trial balance is. फ्रेंड्स आज जो है हम इस टॉपिक में ट्रायल बैलेंस के बारे में जो है पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. दिस टॉपिक इज नॉट टू बिग बट दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. वी कांट स्किप दिस टॉपिक. हो सकता है इसी टॉपिक में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए. सो अगर हम इसको स्किप कर देंगे देन वी विल बी अनेबल टू आंसर दैट क्वेश्चन. सो यहाँ पे बोला गया है द बेसिक पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज A is to find out profit of the business. B is to show financial position of the business. C is to test arithmetical accuracy of the ledger. And D is to calculate net purchase of the business. The basic purpose of preparing a trial balance. जो trial balance होता है वो किस लिए होता है? To test arithmetical accuracy of the ledger. ठीक है. जो ट्रायल The basic purpose of preparing trial balance is to test arithmetical accuracy of the ledger. This is the right answer. Next question is, which of the following is correct about an agreed trial balance? Here first is यानी कि A is both debit and credit aspects of each transaction have been recorded. B is the book are arithmetically correct. C is the debit and credit columns of trial balance have been correctly totaled. Here A is both debit and credit aspects of each transaction have been recorded. B is the books are arithmetically correct. C is the debit and credit columns of trial balance have been correctly totaled. Here D is all of the above. Friends, here answer is all of the above. ठीक है, ये सारे के सारे जो है correct हैं about an agreed trial balance. Next question is, which of the following represents correct sequence of accounting cycle? Here A is journals trial balance. B उसके बारे में next is ledger यानी कि greater than transactions analysis. A is journal greater than trial balance, greater than ledger, greater than transactions analysis. B is transaction analysis greater than journal, greater than ledger, greater than trial balance. So friends, B is the right answer. Next question is, a trial balance prepared after taking into account. A trial balance prepared after taking into account the effect of adjusting entries is known as. A trial balance prepared after taking into account the effect of adjusting entries is known as. क्या बोलते हैं उसको? Here A is financial trial balance, B is adjusted trial balance, C is adjusted trial, unadjusted trial balance and D is normal trial balance. उसको बोलते हैं adjusted trial balance. Adjusted trial balance. A trial balance prepared after taking into account the effect of adjusting entries is known as adjusted trial balance. Next question is, two methods of preparing a trial balance are. कौन कौन से हैं? बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड. टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एडिशन टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर ए ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स. क्या प्रोवाइड करता है? ए इज अ समरी ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड. बी इज a summary of sales made during the period. C is a summary of total cash collected from customers during the period. And D is a summary of all transactions made since the end of the previous accounting period. So here answer is a summary of all transactions made since the end of the previous accounting period. In addition to arithmetical accuracy of ledger, a trial balance provides a summary ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स मेड सिंस द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि पिछला जो बीता हुआ जो पीरियड है उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उस सब की समरी जो है वो बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? हियर आंसर इज बैलेंस मेथड.
balance method is the most popular method of preparing a trial balance? This question is most important. Balance method is the most popular method of preparing a trial balance. Next question is, under balance method, which one of the following is used for preparing trial balance at the end of the accounting period? Here answer is ending balances of ledger accounts. Under balance method, which one of the following is used for? So ending balance of the ledger accounts. Ending balances of ledger accounts is used for preparing trial balance at the end of the accounting year. ठीक है, यहाँ पे end of the accounting period आ गया, तो यहाँ पे ending balance of ledger accounts is the right answer. Next question is, under total method, which of the following is used for preparing a trial balance? Here answer is total of amount columns of ledger accounts. Under total method, which of the following is used for preparing? So total of amounts columns of ledger accounts is used for preparing a trial balance. यहाँ पे ट्रायल है, यहाँ पे टोटल है, सो आंसर इज टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम्स ऑफ लेजर अकाउंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following errors is a journal entry will not be detected by trial balance? Which of the following errors in the journal entry will not be detected by trial balance? Here answer is both debit and credit parts are overstates by the same amount. Both debit and credit parts are overstates by the same amount. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है which of the following errors, तो यहाँ पे both debit and credit parts are overstates by the same amount is the right answer. Next question is, which of the following will be placed in the credit column of the trial balance? इनमें से कौन सी जो चीज है उसको जो है रखा जाएगा किसमें? क्रेडिट कॉलम में. हेयर परचेजेस, बी इज रेंट एक्सपेंस, सी सेल्स एंड डी इज फर्नीचर. यहाँ पे सेल्स जो है वो कहाँ पे रखी जाएंगी? क्रेडिट अकाउंट में, क्योंकि पैसा हमारे पास जो है आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस? ए इज कैपिटल, बी इज अकाउंटिंग पेएबल, सी इज सैलरीज पेएबल. जो आप दे रहे हैं पैसा तो आपके अकाउंट से काम हो रहा है, दैट इज इसको कहाँ पे रखा जाएगा? डेबिट अकाउंट में. सो आंसर इज ऑप्शन सी. सो फ्रेंड्स, टुडे वी हैव डन 12 most important questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Friends, as you know, आपकी सब्सक्रिप्शन ही है जिससे हमें पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोस बनाने के लिए. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.